Namaskaram, hello, and Sat Sri Akal. With CAT just 40 days away, there has been a surge in the number of requests asking me to do a strategy session for the last 40 days. So here I am giving into your demands, and I will try to keep this session as crisp as possible because if there is one thing that is of utmost concern right now, then that is time. तो समय की सीमा को मद्देनजर रखते हुए आज की वार्तालाप शुरू करते हैं. With CAT just 40 days away, you need to have a very clear roadmap of how you are going to run your last lap. If you do not have clarity on what to do on a daily basis or what to do on a weekly basis, you might just spoil the paper because of lack of clarity. So here I am to your rescue, giving you a very clear, crisp session on what needs to be done and how much. Let's quickly begin. The first and the most taxing or the biggest list in today's slideshow is this. So now, because October is more crucial than November, because the closer you inch to the exam, the lesser the time you have and the lesser the burden you should be carrying. So all the burden that you want to carry should be in October and not in November. And this is why October has the biggest list, like I said today. The first thing that you should do if you haven't done it yet is to complete any CAT papers right from CAT 2017 to CAT 2021. In fact, I would strongly recommend that you buy a face-to-face CAT book in which you have 23-year CAT papers. I am sure तुम लोग बहुत मक्कार हो and you have arranged a PDF of the same on Telegram. If you have it, wonderful. If you want to buy it, even better. कैसे भी कर जितना हो सके कैट के जितने भी पेपर्स अवेलेबल हैं 2008 तक के ओके और 2017 से 21 तक के, ठीक है, जितने भी ईयर्स के आपके पास अवेलेबल हैं, अरेंज देम एंड सॉल्व देम एंड यू आर नॉट सॉल्विंग देम विदाउट अ टाइमर और अ क्लॉक. If you are doing a para jumble with options, then you should be taking, for example, 40 seconds instead of 60 because 60 seconds में तो अब हम टीटा करते हैं जहाँ कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं. तो अपना रिलेटिव टाइम उस हिसाब से कैलकुलेट करिए. आप पुराने पेपर्स करेंगे तो यू विल सी दैट द पैसेजेस यूज टू बी लॉन्गर, द क्वेश्चंस यूज टू बी ईजियर. So you have to balance the time accordingly and practice papers. A more realistic practice is 2017 to 2021 papers. We have done 2021 papers on our channel as well. You can practice with me, or you can practice on your own and visit the videos wherever you have a doubt. It's completely your call. Minimize number of classes that you are watching, minimize going to your institute, minimize any sort of, I would say, social gatherings, okay? And यारी दोस्ती ताज़ा माज़ा को थोड़े दिन संदूक में बंद करके पोस्टपोन कर दीजिए और दुनिया से थोड़ा सा कट लीजिए. And make sure that at least 6 out of 7 days you have time for self-study. Do minimum classes. Do not fall for any YouTube traps like crack cat in 20 days, crack cat in 10 days, crack cat in 1 month, and so on and so forth. Stop watching stupid videos. Stop doing faltu ka classes. If there are any practice classes or workshops or master classes being done by the institute that you're enrolled in or the teacher that you follow online or offline, wonderful. Apart from that, no classes are required at this point whatsoever. If you are weak in a topic and in some late crash course kind of batch that topic is getting covered or repeated, or if you have access to a recording of the same, then of course you can visit a couple of classes where you think that you are lagging behind. Otherwise, after 15th of October, classes की आपके जीवन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. कोई भी क्विजेस जो आप किसी भी ऐप पे देते हो, किसी भी पोर्टल पे देते हो, आपका दोस्त करवाता हो, आपका इंस्टीट्यूट करवाता हो, आप किसी यूट्यूब चैनल पे करते हो, आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन हो, एनी सॉर्ट ऑफ क्विजेस, वो कैप क्विज, ग्रामर क्विज दैट यू माइट वांट टू टेक, LRDI, पजल सॉल्विंग, QA, फास्ट मैथ सॉल्विंग, समथिंग लाइक दैट, यू फ्री टू टेक इट एज मैनी एज पॉसिबल. स्टार्ट सॉल्विंग डाउट्स ऑफ योर फ्रेंड्स. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है दैट योर फ्रेंड इज अनेबल टू सॉल्व, please try to be the superman and superwoman and solve their doubts. पकड़ कर लोगों के डाउट सॉल्व करो. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ कि A+B होल स्क्वायर टाइप के डाउट सॉल्व करो, बट genuine good questions that can puzzle a lot of people should be taken up as doubts. Every doubt should be taken as a challenge and you should come to the forefront and solve all doubts whatever possible. I'm sure you are in 100
Telegram groups, you have a study circle, you have friends and classmates and whatnot. Please make sure that you do not turn down any chance of taking up a genuine doubt from anybody who's a fellow aspirant. If you have doubts, please reach out to your mentors or teachers, because this is the last, I would say, time frame in which you can reach out to them and ask them to help you solve questions, because 1 November के बाद practically इतना time ही नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा doubts पर ध्यान दिया जा सके, तब हम अपने finishing touches पर ध्यान देंगे. So all doubts. Workshops and master classes or practice sessions, online or offline, depending on your chosen teacher, chosen institute, chosen platform of study, please go ahead and attend them as much as possible. Please make sure that they are practice based and they are not doing satsang and giving you faltu ka marketing gyan. Timed practice sarvopari hai. It is of paramount importance. If at this juncture you're practicing बड़े आराम से, अपन एक आरसी करते हैं 40 मिनट लगा के, your paper is already gone. I'm telling you this very bluntly. एग्जाम में आपको 40 मिनट्स में 24 का टारगेट है, तो घर पर अगर आप 40 मिनट्स में 24 का टारगेट करके कुछ छोड़कर कुछ करके अपना आप को नहीं टेस्ट करते हैं, सेक्शनल्स में अपने आप को नहीं टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका पेपर वैसे भी नहीं निकलेगा. सो देयरफॉर टाइम्ड प्रैक्टिस, टेकिंग एज मेनी सेक्शनल्स एज पॉसिबल. जितने सेक्शनल्स दे सकते हो उतने सेक्शनल्स दो. अल्टीमेटली सिर्फ सेक्शनल्स देख के राजी नहीं रह जाना है. आप लोग कहते हैं कि सेक्शनल्स तो दे रहे हैं ना, पिछला एम कैट कब दिया था पता नहीं, पिछला सिम कैट दिया था पता नहीं, अभी आधे लोग मॉक खरीद रहे हैं, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया तो वो आधे रेट में मॉक बेच रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट आर यू गाइस डूइंग, बट इफ यू आर अ सिंसियर एस्पिरेंट एंड दिस इज द ईयर, यू हैव टू टेक फुल लेंथ मॉक्स विद अटमोस्ट सिंसियरिटी. पूरी शिद्दत के साथ, इतनी शिद्दत की कायनात को झुकना पड़े. यू शुड टेक फुल लेंथ मॉक्स. पीछे जो छोड़े थे वो टेक होम वाले हैं तो, इंस्टीट्यूट वाले हैं तो. एक और बात, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हैं फॉर योर मॉक्स, तो सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, सिम्युलेटेड समझते हैं सब, अ कॉपी बेसिकली, to experience the simulated environment of a test center, the closest that you can have that simulated environment is at an institute, never at home. मैगी खाते खाते एसी चला के, अभी तो एसी का मौसम चला गया, बट मैगी खाते खाते बाई पोचा लगा रही है, आप मॉक दे रहे हैं. दैट्स नॉट हाउ यू डू इट. गो टू द नियरेस्ट सेंटर जहाँ पे भी आपका मॉक के लिए आपका एनरोलमेंट है. गो देयर, अच्छे से घर से नाश्ता खा के तैयार होके, शेव वेव करके, बाल बांध के, just behave as if it's 27th of November already, and go there and take a mock with utmost sincerity, and go as if it's your final exam, and see the amount of impact that it will have on you on the D-Day. And yes, you're welcome. I know you will thank me for this. So this is a very, very crucial advice. If you can take a test at an institute, please do that. Analysis करना बहुत important है. क्वेश्चन दर क्वेश्चन कहाँ गलती हो रही है, क्या छूट रहा है, मिस रीड किया, मिस इंटरप्रेट किया, खुद को मिस जज किया, ओवर एस्टिमेट किया, अंडर एस्टिमेट किया, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फॉर्मूला भूल गया था, रूट वर्ड गलत समझ लिया, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, आरसी में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप हो गई, मैं अभी भी सेकंड बेस्ट ऑप्शन मार्क करता हूँ क्या, मैं ट्रैप में घिर जाता हूँ क्या. ऑल ऑफ दिस क्लोज ऑप्शंस का वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल. गो थ्रू इट, एनालाइज एवरी क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग, व्हाटएवर डाउट्स यू आर लेफ्ट विथ, analyze them. Whatever are your unattempted questions, attempt them, check your decision making, analyze it, and do not forget to follow up with proper studying. मॉक देते हैं फिर एनालिसिस नहीं करते, मॉक देते हैं एनालिसिस करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, इल्ल, नॉट गोइंग टू वर्क. मॉक भी देना है, एनालिसिस भी करना है, पढ़ना है, इम्प्रूव करना है, फिर से मॉक देना है. सो इट्स लाइक मॉक एनालिसिस स्टडी रिपीट, मॉक एनालिसिस स्टडी रिपीट. एंड October is still giving you time. There is still time when you can work on your weaknesses. 31 का महीना है. अगर आप 15 अक्टूबर से भी स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 16 दिन हैं आराम से अपनी वीकनेसेस पे काम करने के लिए. कुछ अभी भी छूट गया है, रह गया है, तो उसे पढ़ लो. किसी से हेल्प लेके पढ़ना चाहते हो, कोई यूट्यूब वीडियो से पढ़ना चाहते हो, किसी का सब्सक्रिप्शन बोरो करके पढ़ना चाहते हो, इंस्टीट्यूट वालों का दिमाग खा के पढ़ना चाहते हो, पढ़ डालो. जो है यही है. तो ये जो ऑटम का सीज़न है, जिसको हम द सीज़न ऑफ लेटिंग गो कहते हैं, इसका असर होना चाहिए, लेकिन 31 के बाद. सो यू विल लेट गो ऑफ वॉट यू कुड नॉट इम्प्रूव इन द पास्ट ईयर आफ्टर 31st, बट बिफोर लेटिंग गो एटलीस्ट पुट अप अ गुड फाइट, राइट, एंड देन यू कैन लेट गो.
Finally, on the 27th October, we are expecting the admit card. Cat is very fond of delaying it by a couple of days every year. I hope they don't do it this year, but whatever it is, 27, 28, 29, जब भी admit card आता है उसे डाउनलोड करिए, सेव करिए. एक सैम्पल मॉक निकालता है कैट, imcat.ac.in के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे. उस पेपर को सॉल्व करिए, देखिए कैसा आया है, उसको एक मॉक के जैसे ट्रीट करिए. और ये सारा काम आपको अक्टूबर में करना है. और यही महीना है जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है. सो पीपल से दैट नवंबर इज़ द मोस्ट क्रूशियल. इन माई हम्बल ओपिनियन, with all due respect to your expertise, my expertise says that October is the most crucial. November को मैं गिनती ही नहीं हूँ. Those of you who are my regular students, you know that I never count November. And this is, just for formality's sake that I have written 40 days. For me, if you are watching this on the 15th of October, for example, then you have just 16 days to cat. Because if you are not prepared on the 31st of October, trust me, dude, you will not be prepared on the 26th of November either. If you're prepared today, you'll be prepared then. If you're not prepared now, you won't be prepared then either. I'm not saying this to demotivate you or scare you. I'm just being very practical and honest based on my experience and expertise. Let's go to the next chunk, which is नवंबर से पहले कुछ और भी है. सो देन डिड यू फॉरगेट इट? अ लॉट ऑफ पीपल एवरी ईयर आस्क मी, दिवाली पे क्या ही मनाएं, क्यों ही घर जाएं. अच्छा, हम घर नहीं गए हैं तो हम क्या करें? आप घर जाएं या ना जाएं, आप घर पर हो, घर के बाहर हो, हॉस्टल में हो, अकेले रहते हो, लिव इन में रहते हो, पीजी में रहते हो, कहीं भी रहते हो, आपके घर के आसपास एक स्वीट शॉप ज़रूर होगी. आप जा नहीं सकते तो स्विगी करा लीजिए. मेरे हिसाब से तो आपको पैदल चल के जाना चाहिए. और ये पैरों को जो आपने जंग लगा लिया है बैठ बैठ के सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, इनको थोड़ा चलाइए. सो वेयर योर फ्लोटर्स और योर स्पोर्ट शूज, गो आउट फॉर अ वॉक एंड गेट सम स्वीट्स फॉर योर सेल्फ. 250 ग्राम मिठाई खाने से कुछ आपका नहीं बिगड़ेगा. आपके घर के आसपास जब आप मार्केट में निकलेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका रोजगार डिपेंडेंट है दिवाली पर. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ लोकल पॉटर्स selling you mitti diyas, a lot of local potters selling you small bottles of kachi ghani sarso tel or ghee or dalda, small potters selling you those toran and whatever Diwali के जितने भी गन्ने रहते हैं, सजाने के लिए मूर्तियाँ रहती हैं, मोमबत्तियाँ रहती हैं, कलश रहते हैं, कैंडल स्टैंड्स रहते हैं. तो ये जितना हमारा लोकल पॉटरी, इंडियन ट्रेडिशन का कुम्हार, लेबर क्लास बेचारा सारा साल मेहनत करके, पेंट करके, गढ़ कर ये चीज़ें मार्केट में लेकर आता है, आप इनको खरीदें, ज़्यादा बार्गेनिंग ना करें और कम से कम एक दिया जलाएं. If you are a person who's not a Hindu, or if you're a Hindu who doesn't celebrate Diwali, it's absolutely okay. You can still have a sweet or share, I don't know, 50 rupees maybe with your maid or your some child on the road, your choice. But what I'm do catch up with your family and friends if possible. If you don't have them around, do a video call, FaceTime, Skype call, I don't know, do a WhatsApp call maybe. If you are at home, then take a complete off on 24th of October. छोटा सा रंगोली बनाइए, छोटा स्वास्तिक बनाइए, मम्मा की हेल्प करिए, पापा की हेल्प करिए, थोड़े अशोक के पत्ते और गेंदे के फूल लगाइए. मैं ये चाहती हूँ कि आप कैट को हवा ना बनाएं, आप आपके लाइफ को नॉर्मल रखें. सो अभी मैंने आपको पिछले स्लाइड पे कहा था कि सोशल गैदरिंग्स कम करिए, लेकिन फेस्टिवल के दिन वो लागू नहीं होती है. आपको एक दिन पूरा ऑफ लेना चाहिए और फेस्टिवल को बखूबी इंजॉय करना चाहिए. ये ब्रेक आप डिजर्व करते हैं अगर आपने सारा साल पढ़ाई की है तो. सो होम और अवे फ्रॉम होम, यू शुड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग सम टाइम ऑफ टू सेलिब्रेट विद और विदाउट फैमिली एंड फ्रेंड्स. जिसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, वो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे विशेज़ एक्सचेंज करें और अपनी सेल्फीज पोस्ट करें. हम बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे, हम आपको खूब एनकरेज करेंगे और नाइस पिक डियर भी कमेंट कर देंगे. लेट्स गो हेड. सो अक्टूबर इज डन एंड डस्टेड. लेट्स गो टू द 1st of November. And like I said, the last phase is here. In that last phase, I want you to do one extra thing that you might not have done till now. Two extra things in fact. One is, जब हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा अक्टूबर एंड में, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हम 9 बजे पेपर देने जा रहे हैं, आफ्टरनून स्लॉट में पेपर देने जा रहे हैं या इवनिंग में पेपर देने जा रहे हैं. अभी मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने IMS के मेंटोरिंग में मुझे बोला मैं 12 बजे उठता हूँ और सुबह 4 बजे सोता हूँ. ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोला कि मैं रात को 12 बजे सोता हूँ और सुबह 7 बजे उठता हूँ. There are students of all kinds. I am saying that whatever your schedule is right now, IDC, I don't care. But after you get your admit card, make sure that you start practicing
questions more or taking a full length mock in that slot. What I'm saying is, if you get a slot of 9 a.m. in the morning, then you should take your mocks at 9 a.m. in the morning. The reporting time will be around 7:30. So report at the study table at 7:30. Sit for 1.5 hours, revise, read articles, and then at 9 o'clock start taking your mock and make it count. If you're going to the institute, even better. So please make sure that you are taking every damn mock like you are taking CAT with utmost sincerity, seriousness, and like I said, कायनात को आपकी शिद्दत दिखनी चाहिए. So very important advice, your schedule of eating, sleeping, solving should change as per the slot assigned to you by CAT. अगर दोपहर का स्लॉट है तो दोपहर में अगर आप सोते थे तो आप सोना छोड़ेंगे और उस स्लॉट में प्रैक्टिस करेंगे. शाम को अगर आप फुटबॉल खेलने जाते थे या जिम जाते थे तो अभी आप उसका टाइम चेंज करोगे और उस टाइम पर पढ़ाई करोगे. ये इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मदद करता है आपकी बॉडी को और आपके माइंड को काम रखने में, क्योंकि फिर एक मसल मेमोरी बन जाएगी 1 महीने में कि इस स्लॉट पे मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. शुरू में थोड़े दिन दिक्कत होगी, ग्रेजुअली यू विल फील बेटर अबाउट इट एंड ऑन द डी डे यू विल नॉट स्क्रो इट अप. वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस. Right? Second important advice, I spent some 2 hours compiling all the RCs from 2017 to 21 in one place and finding out where do these articles come from. Go through that video. It's a short video. And in that video, you will see, it is upcoming. And in that upcoming video, you will see that there is a list of the CAT articles from 17 to 21. Some of them are from books, like maybe 7 of them, maybe 7 to 8 of them. Leaving those 7, 8, बाकी के 12 के papers जो है 17 से 21 के, go through the articles completely. Like read those complete articles. Take it as a little homework so that you know कि इस तरीके के आए हैं questions. अगर उसमें कोई vocab है तो आप prepare कर लोगे. उस website को आप ज़्यादा visit करोगे. So you should make sure that you are visiting those websites that are CAT's favorites more often. You should make sure that you are reading all of those CAT articles as an extra exercise, and this needs to be done from the 1st to 15th of November. Okay? Another thing, the sectionals will continue, the full length mocks will continue. You can increase the number of mocks that you are taking. The analysis continues, and studying as per as the analysis also continues. Which brings us to the last 15 days before the exam. From the 16th to the 24th of November, you will continue taking sectionals, you will continue taking full length mocks. Another thing that you are adding here is you are going to revise all the rules, formulae, theorems, trigonometry tables, logarithmic shortcuts, deductive reasoning shortcuts, more tick cross practice if required, grammar rules maybe, anything and everything that needs to be learned, that you have learned needs to be revised. So go through that revision and keep this from the slot of 16th to 24th of November. Another thing that becomes super crucial towards the end is stop eating junk food or outside food. Okay, no binge watching of anything. Okay, cut down on your screen time. ठीक है, जितना हो सके स्क्रीन से दूर रहिए. Cut down on any negativity, any drama, any emotional turmoil, घर के झगड़े, माता पिता के पछड़े, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लफड़े, इन सब से पीछा छोड़ा लीजिए. थोड़े दिन के लिए संन्यास ले लीजिए. जो होगा देखा जाएगा, निपटा लेंगे मिलके. मुझे नंबर बता देना, मैं सबको हैंडल कर लेगी. ओके, सो बट नो नेगेटिविटी, nothing that overwhelms you, nothing that makes you anxious, nothing that bothers you. Your career is of utmost priority. Your peace is of utmost priority. Don't try to be a punching bag to your friends during this time. Please take a break for yourself. Prioritize yourself. Prioritize your preparation. Do not throw your year into the dustbin. अच्छे से सोने का, अपना खूब ध्यान रखने का. सर्दी है तो stay warm. Keep yourself covered. Okay. Have घर का बना हुआ खाना. Chill a little, unwind a little. Okay, so padai and relax should be your game for the last 15 days before CAT. Nothing, no huge changes in life, no huge decisions should happen during these 15 days. Okay, sacrosanct, ekdam, no compromises here. Finally,
मैम लास्ट के 2 दिन में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है? भाई कुछ नहीं पढ़ने का। ये एप्टीट्यूड है, स्कूल कॉलेज नहीं है कि तुमने इससे नोट्स लिया, उससे नोट्स लिया, रात को तुम जगे सारी रात, रटा रटा रटा, सुबह वॉमिट किया और फिर बोला कि अरे हाँ वो भूल गया यार, अब तू मुझसे मत पूछ कि मैं क्या लिख के आया हूँ। 10 में से 5 नंबर तो हैंड राइटिंग के मिल जाएंगे, इतने मोती मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं पेपर पे। इट्स नॉट लाइक दैट. If you studied for the entire year, you will do well. If you've not studied for the entire year, no Karishma is going to happen. For 25th and 26th, you're allowed to do anything and everything that relaxes you except getting drunk. तो भंड होने के अलावा सब कुछ allowed है. तो you can go on a date, okay, no hate. You can watch a movie, okay. You can go out and eat with your friends, but please make sure that you are not eating from somewhere that makes you sick. So eat from a joint जिस पे अच्छी भीड़ रहती है और जो fresh खाना बना के देता है. कुछ ऐसा मत खाइए जिससे आप वॉशरूम में बैठे रहें या आपको वॉशरूम में बैठने के लिए मौका ही ना मिले. So eat well, go for a movie, maybe Netflix and chill, maybe talk to your friends, okay. Anything that relaxes you. Read a good book, burn some candles, okay. Exercise, go for a walk. It's usually nice, like a little winter in North India during those time, like the onset of winter, I would say. So maybe enjoy a good cup of tea and coffee, just relax and unwind. So eat, sleep, enjoy and repeat. No alcohol whatsoever, ठीक है. तो पता चला कि कुछ याद ही नहीं रहा नशे में, कि उठ ही नहीं रहे हैं, तो थोड़ा धूम्रपान और मद्यपान से दूर रहें, चाय पान को गले लगाएं. And spend 25th and 26th chilling. Even if your friends are studying, your brain forces you to study, people are taking last moment classes on XYZ platforms, 1 day to cat, 24 hours to cat, फलाना ढिमकाना. अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप इस सब चीज़ों से दूर रहेंगे और वाइजली बिहेव करेंगे. और फाइनली अपना एडमिट कार्ड, अपने 27th को पहनने वाले कपड़े, आपका चप्पल, क्योंकि क्लोज शूज़ अलाउड नहीं हैं, और आप कैसे जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, अगर आपको सेंटर के लिए कहीं ट्रैवल करना है, आपका फ़ोन का बैटरी, keeping maybe a small sastu burner phone for you to carry, how are you going to manage the logistics, all of this should be prioritized and finalized by the 25th. इसके अलावा कोई पढ़ाई नहीं करनी चाहिए. आप कुछ नहीं भूल जाएंगे 2 दिन में, like I said, okay. फाइनली 27th को आप कैट देने नहीं जा रहे हैं, आप आपके लाइफ का लास्ट मॉक देने जा रहे हैं. और जैसा कि आप जानते ही, अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, कि आपको काम रह के जाना है और काम निपटा के आना है, ठीक है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रायोरिटाइजिंग योर मेंटल पीस अबव एवरीथिंग एल्स, टेकिंग द एग्जाम जस्ट एज द लास्ट मॉक with utmost sincerity, without getting anxious. And of course, I mean, maybe I'll try to see you around CAT and give you some last moment tips on how you can stay calm and how you need to jump back to normal and be little resilient, just in case you think you've spoiled a couple of questions or you can't figure out NLRD set or whatever. We'll talk about it maybe when the time comes. But that's it. 27th of November is just another mock. If you have that mindset and if you've taken enough full-length mocks and you've studied the entire year or for 6 months rigorously, religiously, sincerely, abhi shiddat ka phal milega kainat se, right? So if you've given it your all, just do your best and leave to destiny the rest, because trust me guys, destiny does have a role to play. And I say that from a lot of experience. I hope you now have some clarity about how do you lead your life in the remaining 40 days if you're a CAT aspirant, and you have some clarity on what to do. I hope the session also calms you down a little, because when we have clarity and we have a roadway, we have a path waved for us, I think it just becomes easy, yeah. And that's what mentors do for you. So I hope this helped you. If it did, share it with your friends, and do not forget to subscribe to the channel and like the video. Thank you. Good luck for your preparation.